Hey guys, welcome to the Dream Team on the Sports Republic and this is Savio और आज हम बात करेंगे अप्रैल 10 के डबल हेडर जहां पे फर्स्ट मैच होगा KKR और DC और सेकंड होगा RR LSG। सो KKR DC की बात करें तो दिस मैच इज गोइंग टू बी प्लेड एट ब्रबॉर्न और ये एक डे गेम है और जब ब्रबॉर्न पे जो फर्स्ट डे गेम खेला गया था वो सेकंड मैच था IPL 2022 का वेयर DC चेस्ड MI's टारगेट ऑफ 177। द लास्ट मैच जो ब्रबॉर्न पे खेला गया था वो तो सब लोग को याद रहेगा क्योंकि मिस्टर राहुल तेवाटिया played an outrageous two balls, I would say the last two balls where he scored 2 sixes and he won the match for GT. So again, Brabon is right now a very happening place to be and KKR DC will actually be a good game to watch. अगर करंट फॉर्म की बात करें KKR और DC के बीच, so KKR won the first match, lost one and then won 2 more. But DC after winning the opening game उसके बाद 2 लगातार मैचेस में हार का सामना करना पड़ा तो यहाँ पे DC का जो मोरल है वो थोड़ा सा लो होगा and KKR will certainly be on a high, especially with Andrew Russell and Pat Cummins doing the finisher's job. And talking about the head-to-head record, यहाँ पे they have played 29 matches together and KKR is again on top with 16 matches and DC 12 with 1 no result. So again KKR current form and past meetings maybe KKR is little bit on top. And when we look at highest scores, not much difference except that DC's highest score is 228 and when it comes to lowest score, both have been bundled out for less than 100 between these two games. Players face off की बात करें तो we will talk about Rahane and Warner. I know it is little bit of mismatch, but Rahane has scored 784 runs. That is third highest against the Delhi franchisee with an average of over 65. Whereas David Warner has scored 915 runs against KKR, which is second highest. There's only one person above, and that is Rohit Sharma. So again, Rahane and Warner are heavy scorers against the opposite teams. So now let's look at the teams. पहले हम discuss करेंगे KKR and KKR के first part, the players to watch out for. Absolutely. उमेश यादव इज करंटली द पर्पल कैप होल्डर और भाई ने 9 विकेट लिए हैं 4 मैचेस में सो श्योरली उमेश यादव हैज टू बी देयर एंड स्पेशली व्हेन इज टेकिंग विकेट्स इन पावर प्ले सो माइंड यू उमेश यादव इज डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर एंड अ सेकंड पर्सन टू वॉच आउट फॉर इज पैट कमिंस भाई पाकिस्तान से खेल के यहाँ पे आ गए पूरा दबंग एंट्री मार के 56 बना दिया 15 बॉल में joint fastest IPL 50 in history. So Pat Cummins just went bonkers. So again, coming with Pat Cummins replacing Tim Southee, who जिसने वैसे भी कुछ गलत नहीं किया, but he replaced Tim Southee, and now they have a good bowler, they have a good leader, and they have an explosive finisher, I would say. So that is a place to watch out for. And now we will talk about the playing 11. सो अब चलते KKR की लाइनअप की तरफ। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई चेंजेस होना चाहिए। वेंकटेश अय्यर विल ओपन विद रहाणे विद श्रेयस अय्यर नंबर 3 एंड नीतीश राणा नंबर 4। सो actually Rana is having a bad IPL comparative to his last 2 seasons here. So Rana is having a bad form, but he should be at number 4 and number 5 पे आएंगे Sam Billings with the supporting cast of Russell, Narayan and Pat Cummins. Last match में Pat Cummins came above. So this is a very strong lineup, I would say, of the top 8 for KKR with the wicketkeeper Sam Billings at number 5. यहाँ पे एक ही problem है, if they feel Rahane is not in form, they will try to get Aaron Finch inside. और अगर Aaron Finch को लाएंगे अंदर तो Sam Billings बेचारे को बाहर बैठना पड़ेगा और यहाँ पे शेल्डन जैक्सन विकेटकीपर का रोल निभाएंगे. So they'll have to choose if they have to drop Sam Billings for Rahane or they'll continue with Rahane so that they have a good international keeper in their hands. So this is the top part and now we look at the bottom part. I mean the bowlers. जैसे मैंने कहा टॉप 8 में जो बॉटम 3 है वो रसल, नारायण और पैट कमिंस है तो वैसे ही ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स भी है स्पेशली नारायण एंड पैट कमिंस एंड उमेश यादव कमिंग एट नंबर 9 इज एक्चुअली अ ग्रेट फाइंड फॉर दिस ईयर, ही इज इन ग्रेट फॉर्म. वरुण चक्रवर्ती विल कम बैट एट नंबर 11. Rafiq Salam, he did not do a very great job, I would say. Neither he did a bad thing. He just bowled 3 overs for economy of almost 6. Wicket nahi liya, but he was a very consistent bowler in those 3 overs. So I don't think so there'll be any changes, especially with KKR winning the last 2 matches. अब बात करते हैं DC की. So DC has a very shaky IPL considering the strength in the squad. But when we talk about players to watch out for, Prithvi Shaw just had a very good outing that day versus LSG. उन्होंने कुछ 61 बनाया 34 balls में. So definitely our number 1 player to watch out for will be Prithvi Shaw.
The second player to watch out for will be Kuldeep Yadav. तो Kuldeep Yadav has a very refreshing outing in the last 3 matches and उन्होंने कुछ 6 विकेट लिए हैं 3 मैचेस में और उनका जो स्ट्राइक रेट है अभी कुछ अराउंड 11.5 का, that is one of the best in this year's edition. So Kuldeep Yadav is trying to rejuvenate himself and he is definitely a second player to watch out for. One player to watch out for, no stats to say, David Warner पाकिस्तान से आए थे. Everyone thought that he will again give that innings जो Pat Cummins ने दिया था, but for some reason David Warner just couldn't get going and we hope that this next match we'll see the old David Warner back. So आते हैं Playing 11 की तरफ. DC की Playing 11 अगर देखेंगे तो we will have the same opening combination of Prithvi Shaw and David Warner right on top. Yes, right and left hand both smashing batters and they will try to give Delhi a very good start whether they bat first or second. Number 3 pe they had Roman Powell. Roman Powell could again be the number 3 batter with Rishabh Pant coming at number 4. Again Rishabh Pant is scoring runs but he's struggling to get going. लेकिन लगता नहीं है that ये 4 में कोई changes आएगा. We will have Shaw, Warner, Powell and Pant at number 4. और अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो सरफराज खान विल बी एट नंबर 5. ही अगेन डिड अ नाइस जॉब इन द लास्ट मैच बट अगेन सरफराज से बहुत ज्यादा उम्मीद है एंड कुछ कई सालों से हमें उम्मीद है दैट ही विल प्ले अ बिग इनिंग्स. अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट गेटिंग देयर बट सरफराज खान डेफिनेटली हैज अ टैलेंट एंड विल बी देयर एट नंबर 5. और फिर आते हैं उनके ऑलराउंडर्स की तरफ. तो ऑलराउंडर्स में वी विल हैव ललित यादव, अक्षर पटेल एंड शार्दुल ठाकुर. ऑल्दो शार्दुल ठाकुर इज अ बॉलर बट ही इज ग्रेट विद द बैट टू. तो यहाँ पे ऑलराउंडर्स विल बी सेम. आई डोंट सी एनी चेंजेस. सो 5 पे सरफराज, ललित यादव 6, अक्षर 7 एंड शार्दुल ठाकुर एट 8. अगर बॉलर्स की देखेंगे 9, 10, 11 के भी हमने अभी भी कुलदीप यादव के बारे में बात किया था. तो कुलदीप यादव द चाइना मैन विल श्योरली बी एट नंबर 9 एंड देन उनके जो 10 और 11 है वी हैव 1 साउथ अफ्रीकन एंड 1 बांग्लादेशी, एक राइट हैंड बॉलिंग ऑप्शन एंड 1 लेफ्ट हैंड बॉलिंग ऑप्शन इन एंड्रिक नोटिया एंड मुस्तफिजुर रहमान. 2 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स एंड डेफिनेटली डीसी विल बी लुकिंग एट देम दैट दे गिव द ब्रेक थ्रू इन द पावर प्ले और पूरा मैच को उधर ही पलट दे. सो दे विल होप दैट दीज बॉलर्स विल हैव अ वेरी गुड स्टार्ट एंड सपोर्ट द बैटर्स. दोनों टीम्स डिस्कस तो हो गए. अब हम देखते हैं ड्रीम टीम और ड्रीम टीम में जो पहला पोजीशन आता है विकेट कीपर. विकेट कीपर सैम बिलिंग्स, डेफिनेटली सैम बिलिंग्स बिकॉज ही इज नॉट स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स बट ही इज डेफिनेटली लुकिंग मच मोर कंपोज्ड देन ऋषभ पंत. फॉर सम रीजन ऋषभ पंत इज नॉट स्कोरिंग वेल एंड फ्री नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कैप्टनसी का बहुत प्रेशर है उस पर. बट यस, सैम बिलिंग्स डेफिनेटली एज अ सोल विकेट कीपर. और अगर बैटर्स की तरफ आए तो आई वुड गो विद बोथ द ओपनर्स फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स. वी विल गो विद शॉ एंड वार्नर. और अगर कोलकाता से मुझे लेना है तो आई विल टेक राणा. अगेन ईयर इट इज राणा और ईयर. आपको क्या लगता है? मुझे लगता है राणा विल हैव अ गुड मैच ओवर ईयर. सो दीज आर माई टॉप 4 पीपल एंड आई मूव टू द ऑलराउंडर्स क्विकली. यहाँ पे ऑलराउंडर्स रसल एंड कमिंस दोनों ने मैच घुमा दिया 2 बैक टू बैक मैचेस में. सो रसल एंड कमिंस हैज टू बी देयर. अगर आपको डीसी के ऑलराउंडर लेना है तो आई वुड से गो विद ललित यादव. ही बैट्स लिटिल बिट हायर अप द ऑर्डर. ऑल्दो अक्षर पटेल विल bowl his 4 overs but I feel Lalit Yadav should be preferred in your lineup too. So these are the 3 all-rounders over here. I had 3 batters and what I would say 1 wicket keeper. तो बचे हैं 4 spots and 4 spots मेरे लिए bowlers ही लेके जाएंगे. अगर बॉलर्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे वी हैव 4 बॉलर्स, 4 बॉलिंग स्पॉट्स एंड आई विल टेक 2 फ्रॉम केकेआर, 2 फ्रॉम डीसी. थोड़ा बैलेंस रहेगा. एक पेसर और एक स्पिनर. सो आई विल हैव उमेश ओवर हियर विद सुनील नारायण एंड दूसरी जगह पे आई विल हैव एंड्रिक नोटिया विद कुलदीप यादव. अगर आपको लग रहा है नोटिया में नॉट बी दैट गुड इनफ, आप मुस्तफिजुर को भी ले सकते हैं. वैसे भी एक लेफ्ट आर्मर है और देयर इज अ टेंडेंसी दैट it is hard to read left armers. So you all can see the balance that you're on, but this is how my Dream 11 looks like. And when it comes to my captaincy option, I don't have much options, I would say. Whether it is bowling first for KKR, तो मैं पैट कमिंस को कैप्टन बनाऊंगा और अगर बैटिंग सेकंड है तो मैं रसल को कैप्टन बनाऊंगा. So I am literally not I would say not in 2 minds. मुझे पता है ये 2 मेरे कैप्टन्स रहेंगे ये टीम के लिए. अगर वाइस कैप्टन की बात करें तो वी विल हैव अगेन उमेश और वी विल हैव वार्नर ओवर हियर. अगर आपको लग रहा है ओपनिंग स्पेल में जो मैंने कैप्टन के लिए कमिंस को बोला था, यू फील उमेश इज डूइंग वेरी गुड विद द न्यू बॉल, देन यू कैन कीप उमेश एज अ कैप्टन एंड कमिंस एज अ वाइस कैप्टन. बट इफ यू फील दैट वार्नर विल हैव अ गुड गेम, कीप हिम एज अ वाइस कैप्टन. अभी कैप्टन मत रखना, थोड़े ग्रुप में आने दो, थोड़े रन्स बनाने दो, फिर कैप्टन के लिए जाना, नहीं तो इट विल बी अ वेरी बिग गैम्बल ऑन योर केस.
So this is the match between KKR and DC at Brabant, and जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, we have a double header, so we will shift to the next match, that is RR and LSG. अब देखते हैं अप्रैल 10 का जो सेकंड मैच है बिटवीन आरआर एंड एलएसजी एट वानखेड़े। वानखेड़े पे अब तक 4 मैचेस खेले गए, चारों मैचेस में द टीम बैटिंग सेकंड हैव वन एंड फॉर्चुनेटली ऑल ऑफ देम वन द टॉस टू। सो अगेन यहाँ पे अगर टॉस जीता है तो फील्डिंग तो बनता ही है, दैट इज द वे इट इज गोइंग इन वानखेड़े। बाकी सब शेड्यूल में ऐसे नहीं है, बट वानखेड़े में fielding first is the option for captains. And if you look at the last 4 matches, so RR played the last match over here versus RCB and they had a loss of 4 wickets. Lekin playing at the same stadium again will give a little bit of advantage to RR when it comes to this match between RR and LSG. आरआर और एलएसजी की बात करें तो उनके फॉर्म, सो आरआर स्टार्टेड द टूर्नामेंट नाइसली, फर्स्ट 2 मैच में 2 मैच जीते, फिर थर्ड मैच में दे हैड अ लॉस व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग कंसीडरिंग आरआर इज नाउ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स, आई वुडंट से प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एलएसजी ने पहले मैच में जीटी के सामने हार का सामना करना पड़ा, फिर उसके बाद से दे आर ऑन अ 3 मैच विनिंग स्ट्रीक। सो एलएसजी इज डेफिनेटली ऑन अ हाई और यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है व्हेन इट कम्स व्हेन दे टेक द फील्ड। हेड टू हेड की बात करें तो LSG being a new team, again we do not have head to head stats. So this is how the matchup looks and now we will move quickly to the teams. Talking about RR, चलते playing 11 की तरफ, but before that we'll talk about the players to watch out for and definitely top of the list has to be Josh Butler. पहले मैच में भाई ने 35 मारे थे, but उसके बाद he stepped up, I would say he double stepped up and he scored a century and the last match फिर से he scored a blistering 70. So Josh Butler is the orange cap holder currently with 205 runs and he has to be there in the playing 11 as well as the dream team. Talking about the second player to watch out for, Yuzvendra Chahal. So Chahal is right now second in the wicket takers list. He has 7 wickets and he has one of the best averages in this year's edition with 9. So again, जैसे हमने कुलदीप यादव को डिस्कस किया था, again Chahal is also rediscovering his mojo and again will be our second player to watch out for in RR. These are the players to watch out for and we will move on to the playing 11. Playing 11 में RR seems a very compact unit and I don't think so they need to do any changes because Butler and Jaiswal इनका opening partnership अच्छा चल रहा है. Jaiswal is not giving that big scores but as long as Josh Butler is not failing, so we feel that these two guys will be on top. Number 3 पे Padikkal is little bit of disappointing. He's not found his form from the last 2 years और expectations बहुत ज़्यादा है Padikkal से, so we think Padikkal it's the right time for him to start scoring runs. नहीं तो उसके बाद जो आते हैं सैमसन पे एक pressure आता है. So the top 4 looks very strong, very compact. It will be the same, but yes, Padikkal का form is very important for the success of this batting lineup. आरआर की मिडिल ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे नंबर 5 पे आएंगे हेटमायर. सो हेटमायर इज एक्चुअली अ वेरी गुड ब्लिस्टरिंग बैटर बट ही कम्स एट 5 बिकॉज द टॉप ऑर्डर वैसे भी सब अच्छे बैटर्स हैं. सो हेटमायर कम्स एट 5 एंड नंबर 6 पे आता है द आई वुड से एक यूटिलिटी ऑलराउंडर है. He does not bowl all 4 overs and he's never promoted up, but yes, given a chance he does good job. Riyan Parag comes at number 6 and number 7 पे हमारे लिए ऑलराउंडर है but Dream11 ने इनको बॉलर की तरह क्लासिफाई किया है, that is R Ashwin. Ashwin is not having a very good tournament in this year. Wickets नहीं ले रहे हैं, not able to score runs because वैसे भी top order is doing all the bulk of scoring, but yes, Ashwin should continue at number 7. अब इनकी बॉलर्स की बात करें राजस्थान रॉयल्स, सो यहाँ पे जो 4 बॉलर्स है सैनी, बोल्ट, Chahal and Krishna, they are doing a very decent job, I would say, and Bolt has actually strengthened the bowling lineup of Rajasthan Royals, and even Krishna is complementing him quite well. यहाँ पे अगर कोई weak link होगा, if at all you can call him a weak link, then that will be Navdeep Saini, and they have an option. They have Jimmy Neesham in the lineup, और राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 3 फॉरेनर्स को यूज कर रहे हैं. सो जिमी नीशम कैन इजीली रिप्लेस सैनी एंड ऑल्सो एड अ लिटिल बैटिंग स्ट्रेंथ, तो ही विल प्ले अबव अश्विन ऑल्सो. So this is how the lineup looks like as of now. We feel they'll continue with it, but it depends if they want to make last minute changes and वो जो loss एक setback था, if they want to correct it. अब चलते हैं LSG की तरफ. तो यहाँ पे LSG has had a very good campaign. They are winning 3 matches in a row and they will definitely want to continue the streak. So if we talk about the star players, यहाँ पे Quinton de Kock ने कुछ 80 रन बनाए थे 52 balls में in the chase versus DC and he scored more than half of the team's total. So
आइदर राहुल खेलेगा या तो क्विंटन डिकॉक खेलेगा, इट डिपेंड्स। अगर दोनों खेले तो LSG की तो फुल चांदी है। सो डेफिनेटली बट दिस टाइम प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर विल बी क्विंटन डिकॉक। और अगर सेकंड प्लेयर टू वॉच आउट फॉर की बात करें, then we have Avesh Khan. Avesh Khan is little bit leaking runs, but he is still the highest wicket taker for LSG with 7 wickets. So my two players for watch out for will be Quinton de Kock and Avesh Khan. And we move to the playing 11. This is a very unique playing 11 because they have all-rounders right up from number 4 to number 7, 8. So it is a team full of all-rounders because even Huda can bowl and even Badoni can bowl. But discussing the lineup, we'll talk straight from the opening pair. The opening pair is a very quite famous pair. We have KL Rahul and Quinton de Kock. I don't see any changes. They will definitely not change with this opening pair, and especially when both of them are scoring runs. Both of them have together scored around 250 plus runs. So it is a very good opening pair in this year's IPL edition. Number 3 पे they have a specialist batter. They have Evan Lewis. Again, Evan Lewis is not scoring in every match, but जब वो खेलते हैं तो he goes big. नंबर 4 पे आएंगे दीपक हुडा। तो इससे पहले मनीष पांडे थे, दे हैड टू ड्रॉप मनीष पांडे। मनीष पांडे का फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा था इस सीजन, सो दे ड्रॉप्ड हिम एंड उसकी वजह से दीपक हुडा का प्रमोशन हो गया। ही कम्स एट नंबर 4 एंड दीपक हुडा इज एक्चुअली हैविंग अ वेरी गुड IPL। ऑलरेडी 50s मारे हैं वहां पे, ही इज टेकन विकेट्स आल्सो। सो दीपक हुडा इज बिकम अ वेरी बिग यूटिलिटी प्लेयर व्हेन इट कम्स टू लखनऊ सुपर जायंट्स। नंबर 5 पे द सेंसेशन आयुष बदोनी। अगर 10 बॉल मिले या 2 बॉल मिले, he definitely scores runs. He is called the AB baby for some reason, and he is definitely living the tag for it. ये थे इनके टॉप 5, बट अगेन इफ यू लुक एट द टॉप 5, वी हैव बदोनी एट नंबर 5. पिछले मैच में कृणाल पांड्या प्लेड अबव हिम, सो कृणाल पांड्या अगेन थोड़ा फ्लोटर हो जाते, ही कैन प्ले अबव बदोनी ऑल्सो, बट फॉर अस वी फील number 6 would be good. In case lots of wickets go down, then Ayush Badoni can go on top. But yes, we have Krunal Pandya, then we have Jason Holder. Jason Holder is a very big impact player, and आते wickets तो ले लिए, but batting के लिए chance नहीं मिला उनको ज़्यादा. So Jason Holder will be itching to take the bat and just swing around some sixes. Then we have Krishnappa Gautam. Now Gautam has been bought to strengthen the batting, the lower order batting, I would say. And again इसको भी ज़्यादा chance नहीं मिले गौतम को to show his skills with the bat. He did a good job with the ball last match, but yes, Gautam would actually want to go with the bat. But with such a long lineup, we don't see him moving on top of Holder or Badoni or Pandya. The batting order is a very big batting order. 8 तक बैटिंग करते हैं, और जो बाकी 3 है, those are special bowlers at 9, 10, 11. Andrew Tye, Ravi Bishnoi and Avesh Khan. Again, Ravi Bishnoi is a threat if he gets that ball spinning around, especially with his wrong ones too. And Avesh Khan तो वैसे ही prove कर चुका है that he is a person to be relied on. They will definitely look up to Andrew Tye to get more wickets in the power play. This is the Lucknow Super Giants playing 11. आरा तो डिस्कस कर लिया हमने, ये LSG भी हो गया। अब चलते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल सेगमेंट, दैट इज अ ड्रीम टीम फॉर दिस मैच। ड्रीम टीम की बात करें तो वी हैव 6 players on top, 3 wicket keepers and 3 batters. 3 wicket keepers because we have designated wicket keepers in Butler, Quinton de Kock and KL Rahul, or all 3 are scoring very heavily. So definitely 3 wicket keepers, although they are more for their batting skills. And when it comes to batters, we will have Deepak Huda, absolutely in form this year. Badoni, a very impact player, and Padikkal, although Padikkal has not scored a lot of big runs, but yes, with that consistent 30-40, he definitely fits into a dream team playing 11. So this is my top 6, and now we will move to the bottom half of the dream team. So 5 players बाकी है. When it comes to all-rounder, मेरे यहाँ पे तो मैं जेसन होल्डर को ही लूंगा, बिकॉज ही विल डेफिनेटली बोल 4 overs. ही इज एक्चुअली अ बेटर बॉलर when it comes to batting skills compared to batting and bowling skills. So definitely Jason Holder over there. पर अगर आपको लगता है क्या बैटिंग पे किसी को ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं, then कृणाल पांड्या fits in over there because कृणाल पांड्या mostly comes above Holder, और पिछले मैच में बदोनी के ऊपर भी आए थे. So you can choose whether you want Holder और कृणाल पांड्या. I will definitely go with Holder. और अगर बॉलिंग की बात करें तो मेरे पास है 4 बॉलर्स, 2 RR के और 2 LSG के. We have Chahal and we have Trent Bolt from RR, and दूसरे टीम से we have a Bishnoi and Avesh Khan. We have a Pacer and we have a
leg spinner. So it is quite balanced over here, and this is how the dream team looks for us between RR and LSG. Coming to the final part, the most important part, यहाँ पे जीत और हार decide होता है the captains and vice captain. Captain based on form, I would either go with Butler or Quinton de Kock. No doubts about that. Batting first, batting second doesn't matter. I would definitely go with one of these. और vice captain की बात करें, this match I feel the leg spinner will try to do a lot of damage over here. So I have either a Chahal or a Bishnoi over here. Yeah. दोनों बराबर के हैं मेरे लिए तो. So whoever was bowling first in the first innings, I would definitely go with that person as my vice captain of the dream team. So that's it guys, that is from the double header of April 10, KKR and DC and RR LSG. अगर आपको लगता है that this content is good और ये team formation analysis is actually making sense, तो please hit the like button. और अगर आपको और अच्छा लग रहा है and you feel your friends will benefit, you will benefit more, your family will benefit और पैसे बनाने का चांस है, तो share भी कर देना और subscribe करना भूलना मत. I know out there many people have still not subscribed, so please hit the subscribe button. And as you know, हमने already 3-4 videos release कर दिए हैं and आगे भी करने वाले हैं, तो hit the bell icon because you will get notifications just at the morning before the matches start, so you will get time to make your dream team and your analysis also. Thanks for watching guys, and see you next time for the next video on the dream team on Sports Republic. Bye, take care.